Hey everyone, welcome back to my data analyst journey. And if you are new in my channel or in this video, so hi, I'm Astha and I'm documenting my 6 month becoming a data analyst journey. And this is the third weekly recap of learning Excel. So yeah, let's get started. So I started this week by learning dynamic pivot table, and this is very useful for making reports. And I learned ki I learned how I can make a pivot table dynamic in two ways. The first way is using offset formula, and the second way is basically select the data and then convert it to table and then make it pivot table, and it will work as dynamically. And by the way, I'm referring my diary where I usually make the notes whenever I study. So I'm referring this diary for watching the topics what I've covered in previous week. So yeah, so after dynamic pivot table, I learned pivot table on multiple sheet, how I can make a pivot table in multiple sheet using Power Query Editor. And then I learned get pivot data. And get pivot data is जैसे हमने अगर ऑलरेडी पिवट टेबल से डेटा मतलब पिवट टेबल हमने कन्वर्ट कर लिया, उसमें हमने रिपोर्ट बना ली, बट वी वांट कि हम किसी स्पेसिफिक डेटा को उसमें से भी मतलब फैच करके हम कोई other report बनाए. So we can use get pivot table data and we can make report using that formula. And then I learned auto refresh in pivot table. जैसे मतलब आई जैसे मैंने कहा था कि डायनेमिक टेबल मतलब अगर हमको इसमें डेटा को हम अगर अपडेट करते हैं, ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, बट द वे इज़ अगर हम डायनेमिक टेबल में हमें एक बार रिफ्रेश करना होता है पिवट टेबल, देन ओनली वी कैन सी द अपडेटेड डेटा. But auto refresh is like we don't need to refresh our pivot data. We just update our data in the data source and it automatically refresh and add the data whatever we added in our data source. And yeah, and then I learned about logical functions. And logical functions is basically if else like जो भी हम प्रोग्रामिंग में करते हैं उस टाइप के functions like if, nesting ifs and ifs. And then I learn about operator, how we can use operator like and or operator. And then I move on to the वी लुकअप. वी लुकअप वर्टिकल लुकअप बेसिकली हम किसी एक जो भी यूनिक आईडी है उसके अकॉर्डिंग हम और मतलब जो भी डिफरेंट डिफरेंट अनदर कॉलम्स के जो डेटा है वी कैन फैच दैट डेटा यूजिंग वन यूनिक आईडी फ्रॉम द कॉलम और रो. And then I learned about match function and index function. Match function is like if you want to find the position of any specific value in the table, so we can use match function. And if you want to return that value from a specific position, so we can use index function. And then I practice different formula and how I can use index function and match functions together and inside the VLOOKUP. And yeah, that's all about my previous week. But yeah, one more thing I did in this week. I created my first project, or like it's a very basic project, but it was my first project and it was really amazing. मतलब पहला प्रोजेक्ट था और काफ़ी मतलब मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था वो प्रोजेक्ट बनाकर. इट वॉज बेसिकली आई हैड डेटा and I created that project. Like I used VLOOKUP and pivot table only, and this project was my first Excel project, and this was really amazing for me because it was my first project. And yeah, so yeah, that's all about my previous week in Excel learning journey. So I hope you are enjoying my journey because I am really enjoying my journey. लाइक जो भी मैंने सोचा था कि एक्सेल ऐसे होता होगा और मतलब इतना इतना मतलब जो भी मैंने सोचा था कि एक्सेल में बस हम इतना ही कर सकते हैं उतना तो नहीं है. और जो इस वीक में मैंने अपना पहला एक्सेल का प्रोजेक्ट भी बनाया एंड इट वाज रियली अमेजिंग जर्नी एंड आई एम रियली एंजॉइंग दिस जर्नी. I hope you are also enjoying my journey.
So let me know in the comments you are enjoying my journey or not. And so yeah, till then, subscribe my channel. I will see you in the next one. Stay tuned. Bye bye.